How we going? If you don't know me from a bar of soap and you don't particularly care to either, that's all right. You just might want to come here and see what 30 days of Duolingo daily progression looks like in Hindi. Skip ahead to this time right here and you can skip the classic YouTuber preamble before actually getting into the good stuff. But for those of you that are sticking around, I thought I might give a bit of an explanation as to why I've decided to spend about 20 minutes per day studying Hindi on Duolingo. Essentially, I love learning languages. I've spent the last 2.5 years or so studying Korean, on and off, sometimes super dedicated, sometimes, 10 minutes a day or, 1 minute a day or whatever. And I've, in the past few months, started trying to learn simplified Mandarin as well, which has been really fun. Not doing much at all per day, but if you consistently do it every single day, I'm really surprised with how far I've come and how I can pick up characters. But recently, I've noticed that a lot of my new subscribers and viewers and commenters and the like are Indian or from India. So I've decided that why not spend some time actually learning Hindi as well. So essentially that's what this is going to be. 30 days, I'm going to basically learn for 20 minutes on Duolingo, just with Duolingo. I'm not saying Duolingo is the best way to do it. In fact, I personally don't think it's the best way to do it. The times I've spent with tutors and speaking with people that speak the language, that's where the big bucks is. But Duolingo, it's free, even though I'm a subscriber. I'm a big shill for Duolingo, not sponsored by the way. It's free, it's simple, it gives you a really, really good, a decent foundation. I think it's the best way to start a language if you're just curious about it. And then when you get serious and you really start having fun, you can start paying extra for tutors and the like. So the way this video is going to work is that I'll spend 20 minutes per day on Duolingo. I'll take note of all the words and phrases that I learn. And then at the end of each day, I'll speak what I've learned. And essentially it'll stack up all the way to the 30th day, and hopefully by the 30th day I can speak for a minute or two, just with something rehearsed, something that I've practiced day in, day out, but to show off how far you can go just with Duolingo, just 20 minutes per day, learning a language like Hindi. So without further ado, let's just jump straight into it. This is 30 days of progression in Hindi on Duolingo. Main Daniel Hun, main Tikun, main ek आदमे hun. यह एक किताब है और वह एक सेब है. Namaste. मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है. मैं ठीक हूँ. मैं एक आदमी हूँ. मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ. मेरा घर क्वींसलैंड में है. यह क्या है? यह एक किताब है और वह एक सेब है. मैं किताब पढ़ता हूँ. मैं खेला करता हूँ और पानी पीता हूँ. नहीं, मैं चाय नहीं पीता. धन्यवाद. नमस्ते, मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है. मैं ठीक हूँ. मैं एक आदमी हूँ. मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ. मेरा घर क्वींसलैंड में है. मेरे माता पिता भाई और बहन है. मेरे पास 2 बिल्लियाँ है. वे छोटी और बड़ी जानवर है. मैं स्कूल नहीं जाता. यह क्या है? यह एक किताब है. वह एक सेब है. मैं
गिटार बजाता हूँ। हाँ, मैं खेला करता हूँ और पानी पीता हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ। नहीं पीता। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है। आज आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं एक लंबा आदमी हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं खड़ा नहीं हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मेरे घर क्वींसलैंड में है। मेरे माता पिता भाई और बहन है। मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। वे छोटे और बड़े जानवर हैं। मैं खेल देखता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ और नदी पर तैरता हूँ। यह क्या है? यह एक गिटार है और वह एक बुरे सेब है। बुरा सेब है। यह मैं गिटार बजाता हूँ। हाँ, मैं खेला खाता हूँ और पानी पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है। आज आप कैसे हैं? मैं हर दिन बहुत अच्छा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। मैं खड़ा नहीं हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मेरा घर क्वींसलैंड में है। मेरे माता पिता भाई और बहन हैं। मेरे पास 2 सुंदर बिल्लियाँ हैं। वे छोटे और मोटे जानवर हैं। मैं स्कूल नहीं जाता। मैं कुछ खेल देखता हूँ। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ और नीली नदी पर तैरता हूँ। यह क्या है? यह एक गिटार है और वह एक बुरा लाल सेब है। मैं गिटार बजाता हूँ। हाँ, मैं पीली खेला करता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ। मुझे एक 1000 आम चाहिए। मैं हरे चाय नहीं पीता। मुझे भारत बहुत पसंद है। मुझे भारत पसंद है। धन्यवाद।
मुझे सिर दर्द है। नमस्ते, मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है। और आप कैसे हैं? मैं हर दिन बहुत अच्छा हूँ। मेरे साथ बोलो। मैं एक लंबा खुश आदमी है। मेरी आँखें नीली है। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। मैं खड़ा नहीं हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्वींसलैंड में एक सस्ते पुराने कार में रहता हूँ। मेरे कार में 6 बंद दरवाजे और खुली खिड़कियाँ है। मेरे माता पिता भाई और बहन है। मैं दूसरा बेटा हूँ। मेरे पास थोड़ा पैसा है। मैं स्कूल नहीं जाता। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ और नीली नदी पर तैरता हूँ। मैं कुछ खेल देखता हूँ। यह क्या है? यह एक गिटार है और वह एक बुलबुल सेब है। हाँ, मैं पीली केला खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ। मुझे 1000 आम चाहिए। मैं हरे चाय नहीं पीता। मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद। नमस्ते। यह आप सुबह के 9:30 बजे है। मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है। और आप कैसे हैं? मैं हर दिन बहुत अच्छा हूँ। मेरे साथ बोलो। मैं एक लंबा खुश आदमी हूँ। मेरी आँखें नीली है। मैं काम कर रहा हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। मैं खड़ा नहीं हूँ। मैं क्वींसलैंड में एक सस्ते पुराने कार में रहता हूँ। मेरे कार में 6 बंद दरवाजे और खुली खिड़कियाँ है। आप कहाँ से हैं? मेरे माता पिता भाई और बहन है। मैं दूसरा बेटा हूँ। मेरे पास थोड़ा पैसा है। मेरे पास 2 सुंदर बेटियाँ हैं। वे छोटे और मोटे जमाल है। मैं स्कूल नहीं जाता। मैं हमेशा सड़क पर दौड़ता हूँ और कभी-कभी नीली नदी पर तैरता हूँ। मैं कुछ खेल देखता हूँ। यह क्या है? यह एक गिटार है
veha ek bulal seb hai. मैं गिटार बजाता हूँ. हाँ, मैं पीला केला खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ. मुझे 1000 आम चाहिए. मैं हरे चाय नहीं पीता. मुझे बहुत पसंद है. धन्यवाद. नमस्ते. आप दोपहर के 2 बजे हैं. मैं कौन हूँ? मेरा नाम डैनियल है. मैं सबसे तेज अर्थ में हूँ. आज आप कैसे हैं? मैं हर दिन बहुत अच्छा हूँ. मेरे साथ बोलो. मैं एक लंबा खुश आदमी हूँ. मेरी आंखें नीली है. मैं काम कर रहा हूँ. मैं कुर्सी पर बैठा हूँ. मैं खड़ा नहीं हूँ. मैं सही और गलत जानता हूँ. मैं क्वींसलैंड में एक सस्ते पुराने कार में रहता हूँ. मेरे कार में 4 बंद दरवाजे और खुली खिड़कियाँ है. यह एक आसान सवाल है. आप कहाँ से हैं? मेरे माता पिता भाई और बहन है. मैं दूसरा बेटा हूँ. मेरे पास थोड़ा पैसा है. मेरे पास 2 सुंदर बिल्लियाँ है. वे छोटे और मोटे जानवर है. मैं स्कूल नहीं जाता. मैं हमेशा सड़क पर दौड़ता हूँ और कभी-कभी नीली नदी पर तैरता हूँ. मैं कुछ खेल देखता हूँ. यह क्या है? यह एक गिटार है. वह एक बुललाल सेब है. मैं गिटार बजाता हूँ. हाँ, मैं पीला केला खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ. मुझे 1000 आम चाहिए. मैं हरे चाय नहीं पीता. मुझे बहुत पसंद है. धन्यवाद. Thank you. So there you have it. 30 days of me learning Hindi, just using Duolingo with no other time spent on it whatsoever. Roughly 20 minutes, 15 to 20 minutes I'd say per day I spent on the app. And those are a sample of some of the words I learned along the way and phrases thrown in all together to more or less describe myself. A bit of an introduction, which I'm quite excited. There's obviously some Indian families here in Longreach that I would love to surprise with just a little bit of poorly pronounced and very basic Hindi. It was super fun. I'm very motivated to continue going because it's a beautiful looking language. I don't know if that focuses all right there. That's my day 30, but as you can see, I took notes for every day. You can't see it there because I'm bad at it. And yeah, it was fun actually getting to recognize another completely different language. I've learnt Korean's Hangul writing system pretty much completely. Not that I know every word, I just know how every letter sounds. And I'm getting quite close with Hindi. Still a long way to go, but a lot of things I was like, oh yeah, that makes that sound, or that makes that sound, which was really satisfying too. So thanks for watching the entire way. I'll keep making these language videos. I don't know if I want to learn another new language because I feel like 3 is pushing it. 1 is pushing it, 2 is really pushing it, and 3 is a bit over the top. But having a basic understanding of a bunch of language is appealing to me, and learning stuff is really something that I enjoy doing in my spare time. So I guess if you have any suggestions on what other language I should try and learn, or maybe
you know, what you want to see from me next. Leave it in the comments below. And thanks for liking, subscribing, and commenting as well. Cheers. See you later.